Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 12 chapter number 3. The name of this chapter is electrochemistry. Today topic is variation of conductivity and the molar conductivity with concentrations. Both conductivity and the molar conductivity change with the concentration of the electrolytes. जैसे जैसे electrolytes की concentration change होती है उस समय conductivity और molar conductivity दोनों ही change होती हैं. Conductivity always decrease with decrease in the concentration both for weak and the strong electrolytes. Conductivity decrease होती जाती है जब concentration जो है वो weak या strong electrolytes जो होते हैं जैसे ही उनकी concentration decrease होती है वैसे ही जो conductivity है वो भी decrease होती है. This can be explained by the fact that the number of the ions per unit volume that carry the current in a solution decrease on the dilution. इसे हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने भी प्रेजेंट हैं दे कैरी द करंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीज ऑन द डायलेशन. जैसे ही डायलेशन होगा तब भी उसके अंदर वो करंट जो होता है वो कैरी करके रखते हैं. द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन एट एनी गिवन कंसंट्रेशन इज द conductance of the 1 unit volume of solution kept between the platinum and the electrodes with the unit area of the cross section and at a distance of a unit length. If A and L are unity, then G is equal to K. Molar conductivity of the solution at a given concentration is the conductance of the volume V of solution containing 1 mole of the electrolyte kept between the two electrolytes with area of cross section A and distance of unit length. Therefore, A is equal to K, A upon L is equal to K, A is equal to V and the L are the containing 1 mole of the electrolyte. So, diagrams are here, the graph are shown here. Now, the next is मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज. अब जो कंडक्टिविटी उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया. द नेक्स्ट टॉपिक इज द मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन. जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाती है. दिस इज बिकॉज द टोटल वॉल्यूम. ये क्यों होता है? क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम है उसको यहाँ पे देखा जाता है. टोटल वॉल्यूम जो है उसको V से शो करा है. V ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 mole of the electrolyte also increase. It has been found that the decrease in K on dilution of the solution is more than the compressions by the increase in its volume. At a given concentration can be defined as the conductance of the electrolyte solution kept between the electrolytes of the conductivity cell and unit distance having area of the cross section large enough of the accommodate sufficient volume of the solution that the contain 1 mole of the electrolyte. Now the strong electrolytes, what do you understand by the strong electrolytes? For strong electrolytes increase slowly with the dilution and can be represented by the equation. इस तरह की इक्वेशन से हम उसको शो कर सकते हैं. And the next is कि electrolytes and the observe certain the regularities of the electrolytes NaX and the Kx for any x is nearly constant for the example at the 298 Kelvin temperature. Now law of independent migrations of the ions. The ion state that the limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contributions of the anion and the cation of the electrolyte. Thus, if A Armstrong of the lambda 0 degree के अंदर lambda 0 as a limiting molar conductivity of the sodium and the chloride ions represently, then the limiting molar conductivity of the sodium chloride is given by the equation. This type of equation हम molar conductivity को show कर सकते हैं. In generally, if an electrolyte on dissociation given V cation and the V anions, then the limiting molar conductivity is given by lambda plus V lambda 0. Now here lambda 2 and lambda 0 plus ion and the lambda 0 minus ion are the limiting molar conductivity of the cation and the anion representatively. तो यहाँ पर जो lambda 0 माइनस आयन है प्लस आयन है ये मोलर कंडक्टिविटी को शो करते हैं. जो प्लस आयन है वो कैटायन को शो कर रहा है, जो माइनस आयन है वो एनायन को शो कर रहा है. Now the next is the weak electrolytes.
the means of the weak electrolytes is the weak electrolytes like acetic and have a low degree of the dissociation at the higher concentration, and is the such electrolytes the change in meter with the dilution of the due to the increase of the degree of the dissociation and the consequently of the number of the ion is the total number of the solution and the contains the 1 mole of the electrolyte. So zero concentration जो है उसको भी यहाँ पर बताया गया है कि at an infinity dilution the concentration C is zero electrolyte dissociation completely, but at a such low concentration the conductivity of the solution is so low and it cannot be measured accurately. जो conductivity होती है इसकी वो बहुत कम होती है जो कि accurately नहीं मापी जा सकती. Independent migration of the ions at any concentration C if A is the degree of A is equal to del के अंदर हम लोगों ने इसको यहाँ पर शो किया है. बट द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक एसिटिक एसिड एंड द इक्वेशन ऑफ द K2 becomes the Ka is equal to Ca2 upon 1 minus A is equal to Ca square upon Am 1 minus Am upon 1 minus A0 am is equal to the answer is Cam square and the A0 am in a bracket A0 am minus Am using Coleridge law of the independent migration for any electrolyte from the del 0 of the individual ion. Moreover, the weak electrolytes like acetic acid it possessed by the determinant of the value of the at the given concentration. तो इसके ऊपर जो concentration है उसको मापा जा सकता है. Now views क्या है इस law के? The first है calculation of a molar conductivity of infinitive dilution for weak infinitive dilution for weak electrolytes, calculation of the degree of the dissociation, calculation of the dissociation constant of for a weak electrolytes and the calculation of the solubility of the sparingly soluble salt. ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो यूज़ है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स. Electrolytic cell external source of the voltage is used of the bring about the chemical reaction. One of the simplest electrolytic cell consists of the two copper strips dipped in an aqueous solution of the copper sulfate. If a DC voltage is applied to the two electrodes, then the copper ions discharge at the cathode at the flowing reaction that place copper plus 2 electron minus is equal to copper metal is the deposits on the cathode. At the anode, copper is the converted into the copper ions by the reaction. Copper is equal to copper ions plus 2 electron minus ions. This copper is dissolved at the anode and the deposit at the cathode. This is the basis of the industrial process in which the impure copper is converted into the copper to the high purity. Now this is impure. This impure copper is made an anode, the dissolve of the passing current. The pure copper is dipped at the cathode, and the sodium and the magnesium metals are produced by the electrolysis of the fused electrolytes, and the aluminum is produced by the electrolysis of the aluminum oxide is the presence of the electrolytes. Now the Ferraris law of the electrolysis, the Ferraris two laws of the electrolysis are: the first law is the amount of the chemical reaction which occurs at the any electrons during the electrolysis by a current is proportional to the quantity of the electricity passed through the electrolyte, and the second law is the amount of the different substance liberated by the same quantity of the electricity passing through the electrolytic solution are the proportional of their chemical equivalent weight, atomic mass and the or metal divided by the number of the electrons required, the reduce of the cation, and according to the Ferraris Q is equal to IT. Now the product of the electrolytes, product of the electrolyte depend on the nature of the material. जो हम material है उसके nature के ऊपर depend करता है कि हमें product कौन सा मिलता है. And the electrodes is insert, it does not participated in the chemical reaction and acts only as a source of the sink of the electron. जो platinum और जो gold है वो electrode में participate नहीं करते हैं, लेकिन वो source available करवाते हैं जिससे कि electron जो है वो move हो सकें. On the other chemical reaction, the acts only the source of the sink electron. On the other hand, if the electrode is reactive, participate in the electrode reaction, thus the product of the electrolysis may be differ for a reactive and inert electrode. The products of the electrolysis depend on the different oxidizing and the reducing species present in the electrolytic cell and their standard electrode potentials. Moreover, some of the electrochemical process through the feasible as are slow kinetically, that at lower voltage
and these do not seems to take place, and the extra potential which is called the over potential has to be the applied, which makes such process more difficult to occur. Now the next is the batteries. Batteries जो है वो टू टाइप्स की होती है बेटा, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। और होती क्या है बैटरी? एनी बैटरी इट हैव एनी वन और द मोर देन द वन सेल कनेक्टेड इन अ सीरीज। एक से ज़्यादा मतलब टू या टू और मोर देन टू सेल्स जो हैं वो सीरीज फॉर्मेशन के अंदर यदि आपस में कनेक्टेड हों तो उन्हें बैटरी कहते हैं। Cell that we use to a source of the electrical energy by basically a galvanic cell, where is the chemical energy of the redox reaction is converted into the electrical energy। जो redox reaction के समय में जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर किससे चेंज होती है? सेल से चेंज होती है। सो द डायग्राम ऑफ द बैटरी आर हियर। SO4 electrodes are shown here and the lead grid filled with the spontaneously lead and the lead grid filled with the PbO2। सो द नेक्स्ट इज़ द प्राइमरी बैटरीज़ के बारे में बताया गया है कि प्राइमरी बैटरीज जो होती हैं बेटे वो कुछ समय के लिए होती है यूज़ ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम बैटरी बिकम डेड एंड कैन नॉट बी रीयूज अगेन। इस तरह की जो बैटरी होती है वो एक बार में हम लोग काम में ले लेते हैं, उसके बाद में वो ख़त्म हो जाती है और उसके बाद में हम उससे वापस काम में नहीं ले सकते। जैसे कि सेल लगते हैं हमारे पास रिमोट में जो सेल लगते हैं, तो एक बार जब हम लोगों ने पूरी एनर्जी ले ली उसके बाद में वो काम में नहीं आते, उन्हें हमें थ्रो करना होता है। लेकिन जो दूसरे तरीके के जो सेल होते हैं जिन्हें कि हम कहते हैं, जैसे एल्कलाइन बैटरी आपको दिखाई गई है यहाँ पे, स्पेक्ट्रस जो हैं वो आपको शो किए गए हैं। सेकेंडरी बैटरी जो होती है, सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज बाय द पासिंग करंट थ्रू इट इन द अपोजिट डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी यूज अगेन। अ गुड सेकेंडरी सेल कैन अंडरगो अ लार्ज नंबर ऑफ द डिस्चार्ज एंड द चार्जिंग साइकिल्स। जो सेकेंडरी बैटरीज जो होती हैं बेटे उन्हें हम बार बार काम में ले सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में इमरजेंसी लाइट्स हैं, तो हमने क्या करा, जब एक बार उसको चार्ज कर दिया है तो काम में लेने के बाद में जब वो डिस्चार्ज हो गए तो हम उसे वापस से चार्ज करते हैं और फिर वापस से हम उसे काम में ले सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ बैटरी इज कॉल्ड द सेकेंडरी बैटरी। देखिए यहाँ पे लेड स्टोरेज बैटरी इज द सेकेंडरी बैटरी हियर। ओपनिंग टू एंड वाटर जो है वो यहाँ पे दिया गया है। SO4 एंड वाटर का जो प्लेस है वो यह बताया गया है। स्पेक्ट्रस जो हैं जो कि इन्हें अलग कर रहे हैं उन्हें यहाँ बताया गया है। सो ये जो पार्ट है आपका बैटरी का वो यहाँ पे शो किया गया है। इन दिस एग्जाम्स ये जो पोर्शन है वो कट हो गया है, लेकिन आपको उसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप कि जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड टुडे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।